So, hi everyone, I am Namrata Mehta and I have recently got married. So, I am shifted to Chennai and basically I am from Chhattisgarh. And I did my bachelor's from VSPM College Nagpur and master's from Bangalore. And after that, yes, I got to know about this course. And so I can proudly add this that after this, I did this course. Or maybe I will just skip all the above and I'll say I did this only course. So yes, I was very much excited for this day, and till day before yesterday, it was not confirmed. Even I told sir, my mama is admitted in the hospital, so my husband told ki you do the ceremony, and I'll go and take care. So yes, I'm attending it here. Earlier, before doing this course, I was working in one clinic. So where the treatment protocol was something like in Chennai, everyone are practicing trigger point therapy release. So which I thought that, you only need to do so much of work in that you need so much of strength using your hand, your knuckles, and every day we are doing the same pattern. And there it was more of robotic work. Like from the assessment till treatment, only sir was going to tell everything like what you have to do. So I was not able to use my own brains. It was all like, just a spoon feeding wala thing that you have to do this. So I didn't like that work. And yes, L1 program maine kiya. And I was so impressed by ma'am and sir's thing, whatever they told. And I was like, कि नहीं अब करना तो है, but समझ नहीं आ रहा है करूँ कि नहीं. And then I called ma'am one day and बोला कि मैम आप ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे तो लग रहा है मैं छोड़ दूँ फिजियोथेरेपी, कुछ समझ नहीं आ रहा है. फिर मैम ने फ्रॉम द स्क्रैच मुझे समझाया कि फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे करना होता है, असेसमेंट से लेकर ट्रीटमेंट तक पेशेंट को काउंसलिंग कैसे करना है, एवरीथिंग मैम टोल्ड. एंड आई वाज लाइक कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए. आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे ये कोर्स करना है, अभी कुछ भी होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक. So yes, because I was studying outside from so long, isliye I have just 1.5 years of experience. And from now on, after doing this course, I guess now I'll gain much more experience. And after doing this course, I felt that experience does not matter much. It is the skills, and both like the communication skills and the skills what you perform on the patient, that is the most important thing. So yes, I'm glad that I did this course. So the challenges before what I was feeling, so I was literally burning out. So the heading or the concept of this, that burnout to bliss, was like really apt for me. I was literally burning out, and now I'm in the bliss phase. So yes, before I start sharing the challenges, the first challenge which came was like after 12th I wanted to become a choreographer, but उस time पे मुझे ACL injury आया था. तो घर वाले बोले कि अभी क्या तू टूटे पैर से जाएगी डांस सीखने. सो उसके वजह से आई जस्ट लेफ्ट दैट, एंड दैट बोले कि प्रोफेशन कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो डिग्री लेनी पड़ेगी. सो बिकॉज ऑफ दैट आई लैंडेड अप इन फिजियोथेरेपी. सो लाइक दिस आई लैंडेड अप, एंड या मास्टर्स भी कर लिया, बैचलर्स भी हो गया, और अभी ये कोर्स भी कर लिया, रोते धोते लेकिन कर लिया. So challenges were like the first was the worst thing, first year of physiotherapy से ही कि वो सब हमको समझते थे कि हम मसाज वाले. तो उनको ये समझाना कि नहीं हम मसाज वाले नहीं, हम फिजियोथेरेपिस्ट है जो मोडालिटी से एक्सरसाइज से हम आपको ठीक करते हैं. So that was the worst challenge I have ever faced in my life, that कि अरे तुम तो मसाज वाले हो, अरे तुम तो मसाज वाले हो. That was the very bad thing which I felt about our profession. Then college में whatever they have taught us, it was not concise. सब vaguely सब पढ़ा दिया, कुछ बताया नहीं कि कैसे assessment start करना है, कैसे treatment करना है, कैसे differential diagnosis करना है. ये सब हमको कुछ भी नहीं सिखाया. तो till masters I was facing this problem, this challenge कि कोई भी patient के पास मैं अगर जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे कितना assessment लेना है, कौन सा special test करना है, कैसे protocol follow करने हैं. So all these challenges came to me. और कॉलेज में कभी भी कोई भी नी पेन का पेशेंट आया तो लगता था ओए नी है, शोल्डर पेन आया तो फ्रोजन शोल्डर है, और बैक पेन आया तो डिस्क बल्ज है. ये एक कॉमन हमारा रहता था. इसके आगे हमको कुछ पता ही नहीं था कि और भी इतनी सारी कंडीशंस होती है. So yeah, this was the biggest challenge for me जो मैंने फेस किया. एंड आफ्टर डूइंग दिस कोर्स ये सारे challenges मेरे चले गए कि now I'm confident कि yes, अभी अगर नी पेन है तो मुझे किस किस एंगल से सोचना है, कैसे असेसमेंट करना है, कैसे स्पेशल टेस्ट लेना है. सो दैट आई लर्न. वन मोर प्रॉब्लम वाज फॉर द मनी. एवरीवेयर इट वाज लाइक कि
अरे मैम आप सिर्फ मोडालिटी लगा रहे हो और इतने पैसे ले रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज 4-5 ही तो करा रहे हो, इतने पैसे ले रहे हो. So even for 200 rupees, they used to argue a lot. So at that time I was feeling ashamed कि शायद मैं कुछ ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रही हूँ. So when I did this course, sir was like कि कभी ये खुद ही मत सोचो, तुम अगर ऐसा सोचने लगोगे कि मैं इतना ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ तो तुमको कोई पैसे देगा ही नहीं. So for that reason it was like वो माइंडसेट मैंने अपना चेंज किया कि नहीं, वो माइंडसेट से नहीं जाना है. पैसे देंगे क्यों नहीं देंगे, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको, इतना प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं. So yeah, that challenge also I overcome. Communication skills, which I was lacking in. So now I'm working towards it. And analogies मैम की इतनी अच्छी लगी मुझे कि अभी सभी पेशेंट्स को मैं वही चिपका रही हूँ. Right. Good. And pricing, again that was a tough thing. पता ही नहीं था कभी कि इतने अलग अलग कंडीशंस के लिए सिंगल जॉइंट, 2 जॉइंट, उसके लिए ऐसे चार्ज करना होता है. हमको लगता था कि एवरी डे वी हैव टू चार्ज द सेम अमाउंट. कभी ये डिस्काउंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था. बट yes, as we came to know in the pricing system as sir explained us, so that was very beautifully explained. And like sir has told all the secrets about their clinic, I think none of the physiotherapists or anyone will do this कि उनके clinic में क्या चल रहा है क्या नहीं. But like an open book, you have told us everything and you made us understood कि कैसे pricing का calculation करना है. And you have made that calculation thing very easier for us by giving that Excel sheet to us. So that was really good. And whatever challenges I faced, ये 4 महीने में मैंने सब overcome कर लिया. Not to an extent, but yes, I'm trying to do it. But जो burnout हो रही थी उससे तो at least I feel कि नहीं, I have learned so many things and I'm implementing all those things. And this journey was fantabulous. Like every day का एक रूटीन हो गया था कि किचन का काम करके सुबह करना है मुझे. ये पहले सब बोलते थे कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होगी, शादी के बाद तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते. बट फॉर मी इट वाज नेवर लाइक दिस. घर वाले ही बोले कि ठीक है तुझे पढ़ना है तू पढ़ ले. सो किचन का काम करने के बाद सुबह 10:30 से लेके 1 बजे तक आई वाज लाइक कि अभी मेरा पढ़ाई का टाइम है. कभी कभी तो इवन किचन में काम नहीं करना होता तो आई वाज लाइक कि मम्मी आज मेरा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, आई वोंट बी अवेलेबल. हनीमून पर हम लोगों ने ले लिया आपका. पढ़ाई में चला गया. Yeah, no, but I liked it. I mean to say कि that was a blessing in disguise, I can say. Good. And the best thing about this was that ma'am and sir has shown us the reality, like the real world, how to survive in the real world. And you guys have covered like each and every point, starting from patient counseling to assessment till the discharge, what all things need to be done. And the way ma'am and sir has explained was so soothing to my ears. I literally feel like, you know, कि मैं उनका बस voice record कर लूं and every time बस वो सुनते रहो. Because बोलते हैं ना कि the way you explain to others, वो बात ऐसे दिमाग में बैठ जाती है. और कभी लगता है ना कि किसी दूसरे के बोलने से बातें जल्दी समझ में आती है. So I guess it was like this कि मैम और सर ने जो भी explain किया वो मुझे बहुत जल्दी से समझ में आ गया. And all the assessment, exercise protocols are designed like beautifully कि हमको एक जगह भी डाउट नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ. मैम ने पहले बोला था कि अगर तुम कुछ नया सीख रहे हो तो पहले तुमको पुरानी चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा. सो स्टार्टिंग में ये डिफिकल्टी आई कि अरे यार ये एक्सरसाइज में अभी ये क्यों हो रहा है. फिर मैम का वो रिवाइंड करते थे, हम उनकी टेप चलाते थे दिमाग में कि नहीं पहले अनलर्न करना है फिर रीलर्न करना है. So I did that way. So abhi now I'm confident कि नहीं, I will be able to do all the assessments, protocols, treatment, however ma'am has taught us. Excellent. So even in between this course there were like many challenges I faced. घर पे 2 डेथ हो गई, उसके बाद भी I was like कि नहीं, कहीं ना कहीं से I used to take out my time to study. कि डिवाइड कर लिया कि अभी बाहर ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे मैंने MDC सुन ली, घर पे है तो तब फिर मैंने वीडियोस देख लिया. तो सर ने ये जरूर बोला था कि बस तुमको दिन का 1 घंटा देना है, हो जाएगा. आई वाज लाइक नहीं, इसको 1 घंटा नहीं देना है, बहुत सारे घंटे देने हैं. लेकिन बट इट यूज्ड टू बी फन. एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि मुझे बोर हो रहा है कि अरे यार नहीं ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. It was really interesting because the way you have explained was like कभी ऐसे बोझ नहीं लगा कि अरे यार हमको क्यों पढ़ना है. जैसे कॉलेज में पढ़ते थे ऐसा लगता था कि अरे यार क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं.
but here each and every topic was so interesting, and especially sir आपका the MBA का thing which you have marketing skills and all whatever you have told us. आज तक लिटरली कभी नहीं सोचा किसी का भी क्लिनिक ओपन हुआ हो तो ये जगह पे क्यों ओपन हुआ है. Like how you have told us the site selections, we have never thought it कि इसका रीजन ये है कि मंदिर में लोग आएंगे तो उसके बाजू में खुला होगा तो मंदिर से लोग वहां जाएंगे. Never thought of that. These are all practical, the experiences. Exactly. So you and ma'am has taught us the practical things. Yes. सब जगह theoretically बताते थे हमें, पर practically how we have to do that we have learned from you. And doing this course, it has made me confident, smart, bold, outspoken, and now people have started respecting me as a person and as a physiotherapist. Exactly. Because now I feel कि when you are confident, it is seen on your face, and patient भी उतने confident हो जाते हैं कि नहीं जब डॉक्टर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सही बोल रहा है और मेरे को ठीक करके देगा ये. So the one thing which sir told कि कभी भी patient के पास जब जाते हो तो 3 things you have to keep in mind. पहला कि that you are going to give them a recovery, you are going to give 5-star credentials, and then you are getting the money. So जब से ये mindset लेके चला है तब से I've started seeing the results. Good. And जो भी protocols वगैरह मैं पढ़ी हूँ वो पहले मैं खुद पे follow कर रही हूँ, 1 week का करते जा रही हूँ, so that then when I'm giving to patients, so I tell them कि ये चीज मैं खुद भी करती हूँ, that's why I'm teaching you and I have got the results. So the protocols and all भी मैम ने जैसा बताया है, जिस वे में वो प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको कि अरे यार इसको कितने इसके लिए देना है, इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है. तो पेशेंट को भी मैं उसी तरह सिखाती हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ऊपर से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज आप करते जाओगे. सो दैट वाज अ गुड पार्ट. एंड पैसे के लिए तो अभी मैं बिंदास बोलती हूँ, इतने पैसे हैं, आपको करवाना है तो करो, नहीं है तो आप कहीं और जाओ. And that's very important. And अब लगता भी नहीं है. Yeah. And अब लगता भी नहीं कि I'm charging high. Right. Good. Very good. Yes. And sorry, I've written some points so that I don't miss out on any points. That's very nice. Yeah. And even professionally and personally, professionally I told how I have improved. Personally also, I have improved my communication skills. I have learned time management. And I'm like open to communication to everyone in the family. So that was a good part. Earlier I was scared कि मैं ये बोलूंगी तो क्या लगेगा उनको, ऐसा करूंगी तो क्या. तो अभी तो ऐसा है कि बस पढ़ाई करनी है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अभी मेरा पढ़ाई का टाइम है, मैं बाद में जाऊंगी. So that was really good thing. Okay, so one incident I would like to share. मैंने ये मैम और सर दोनों के साथ शेयर किया है ऑलरेडी, बट since I want other people to also know it. मेरी एक पेशेंट थी रिसेंटली ही जिनको मैं ट्रीट कर रही थी. तो स्टार्टिंग में शी वाज लाइक कि जब वो मुझे ऐसे ही बिल्डिंग के नीचे मिली तो शी वाज आस्किंग मी कि तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो तो मुझे भी करवाना है, तो यू जस्ट टेल मी और प्राइसिंग तुम्हारा कैसा क्या है एंड आई विल डू इट. तो मैंने बोला ओके. फिर आफ्टर अ वीक मैंने सब जब प्राइसिंग का आने वाला था तो आई वाज लाइक कि मैं अभी 1 वीक बाहर हूँ, मैं आने के बाद आपको करती हूँ. फिर मैंने पूरा प्राइसिंग का सब समझ लिया, सब रेडी किया, अपना पेपर एंड ऑल सब. तो उसके बाद मैं गई, उनको बताई कि आपका ये कंडीशन है और आपका इतना इतना प्राइसिंग लगेगा. तो फर्स्ट शी वाज लाइक ओके. तो बोले कि मैं अभी इंस्टॉलमेंट में पे करती हूँ. तो मैंने बोला ठीक है. उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे किया स्टार्टिंग में. उसके 1 वीक के बाद शी वाज लाइक कि बोले आपका जो कैलकुलेशन है वो कैसे आया है, मैं तो कैलकुलेट करूँ तो वैसा तो नहीं आ रहा है. फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इजी वे में बताया कि इसके वजह से 2 जॉइंट है आपका, इसलिए आपका ये प्राइसिंग आ रहा है. तो शी वाज लाइक कि नहीं मैंने तो वो प्राइसिंग चार्ट अच्छे से देखा ही नहीं, तो अभी ये नहीं हो पाएगा. तो मैंने बोला अपने ही सामने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मैंने आपको कार्ड भी दिया था, आपको दिखाया भी कि क्या प्राइसिंग है, बताने के बावजूद भी कि 2 जॉइंट का इतना लगेगा, 1 जॉइंट का इतना, और उसके बाद मैं डिस्काउंट भी आपको इतना दे रही हूँ, डिस्काउंटेड रेट भी उसमें लिखा था. सो शी स्टार्टेड टेलिंग कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टूड कि शी वांटेड एन इंस्टेंट रिजल्ट. फिर मैंने ये मैम से शेयर किया एंड मैम टोल्ड कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेशेंट को जरूरत है एंड कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको बताने से अगर वो कर रहे हैं दैट मीन्स दे एक्चुअली वांट टू रिकवर. जो जागना ही नहीं चाहते उनको जगाने की कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस वाज द बेस्ट एनालॉजी, आई लाइक्ड इट. सो उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट हुए एंड फिर मैंने बोला कि शायद आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशंस इज नॉट मीटिंग. सो आई फील कि आपको जहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जा रहा है वहां पे आप जाइए, बिकॉज आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स.
क्योंकि मैं अभी आपको 1 हफ्ते के लिए ट्रीट करूंगी, आप छोड़ देंगे, फिर से थोड़े दिन बाद आप मुझे बोलोगे कि पेन हो रहा है, फिर से मैं आपको मशीन ट्रीटमेंट पहले दूंगी। सो वो साइकिल वहीं वहीं चलते रहेगा, वो ब्रेक होगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इट्स बेटर आप कहीं और दिखा लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको ठीक नहीं होगा, फिर आपको अगर समझ में आता है कि इसको लॉन्ग टर्म की जरूरत है, तो आप मेरे पास जरूर आइएगा। ये बोल के फिर मैंने पेशेंट को छोड़ दिया। सो इन दिस पेशेंट्स केस आई अंडरस्टूड कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, प्राइसिंग की किससे क्या कैसे बात करनी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पेशेंट एक्चुअल में रिकवर होना चाहता है। सो नाउ आई हैव मेड अ स्ट्रैटेजी कि कोई भी पेशेंट को मैं अगर पूछूं सबसे पहले जाके, पूरा उनको असेसमेंट वगैरह सब करने के बाद, पहला क्वेश्चन मैं यही पूछती हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। द मोमेंट दे से शॉर्ट टर्म, तो आई टेल देम कि मैं नहीं दे पाऊंगी, आपको अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू। सो दिस आई एम फॉलोइंग नाउ। And yes, the future plan. So first of all, I'm working towards my communication skills, the assessments, and performing all the protocols on myself. And since I've recently got married, so maybe in future, near future, I'll be opening up my own clinic. So I'll be working towards it. And there are some of my limiting beliefs, so which I have to break. And maybe yes, I'll be able to go and open up my own clinic, because right now there are many limiting beliefs. One of being like कि being a woman मैं कैसे करूंगी, but when I see Priyanka ma'am, I was like कि नहीं होगा, उनसे हुआ है तो मुझसे भी होगा। कोई ना कोई एक दिन आएगा जिस दिन मैं भी खोलूंगी अपना क्लिनिक। So the future plan is right now like this. And the message which I would like to give to the fellow colleagues is like कि आग बंद करके बिना कुछ सोचे समझे इस वर्कशॉप को कर लो, क्योंकि ये हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, सब है। ये एक जादुई यंत्र है। And why I'm saying is that because till date I have never seen any physio in the college also or outside explaining such a beautiful in a beautiful manner, and minute to minute details you have covered, and especially the problems the physios face, practically how to solve it. जितने भी एनालॉजीज यू हैव यूज्ड, नोबडी हैज एवर टोल्ड अस कि आज लगता है कि वो एनालॉजीज सुन के हमको भी लगता है कि हमको भी समझ में आता है कि हमारी बॉडी पे हमको कैसे काम करना है, एंड हाउ वी हैव टू टेल टू द पेशेंट्स. सो and your hard work and the efforts which you have put, it really shows the hard work you have done for us. Hats off to you and ma'am. I'm really grateful that I have a mentors like you. And recently I met you, so I was very happy that I got the chance to meet. The moment I got my tickets, and I was like, the first message I dropped to them that I'm coming to Pune, please spare some time for me. And yes, I got this book from ma'am. Yeah, thank you. Thank you so much. And yes, thanks to Vihan also for contributing some of his time for our presentation. Somewhere very. Thank you. And Priyanka ma'am is my physio mom. Yes, true. Good. So sir and ma'am, आप लोगों को तो जितना thank you बोलूं उतना कम है, because this workshop was really burnout to bliss. And right now this confidence what I have, what you can see in me, earlier नहीं था. Every time patient आता था, मुझे किसी ना किसी को फोन करके पूछना पड़ता था कि अरे यार ये पेशेंट आया, अभी मैं क्या करूं, क्या ट्रीटमेंट दूं, क्या एक्सरसाइज दूं. I was not very much sure. अभी भी वो है थोड़ा सा, but comparatively I can say which was like जो मैं 100% डरती थी, now it is like कि मैं सिर्फ 50% डरती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं खुद पे काम कर रही हूँ, but I know one day वो सारा डर चला जाएगा and I'll be the best physiotherapist. Yes, obviously. So keep And doing it is it. all because of support. Yes. Good. Very good. In fact, yes, because of a lack of experience, yes, and one more thing is a language barrier also. Okay. Yeah. And of that connection between directly from the north to south. Okay. So it may take a little time, but don't give it a longer time. Okay. Try to take one step always ahead. Don't keep it aside that let them take. No, you have to take that initiative, right? Take first step towards your patients, this thing, and try to connect with them better, actually. Okay. And the best way to say thanks to us is by growing, I would say. Yeah, okay. correct. The more you grow, okay, that itself is a basically a gratitude of yours to us. Okay.
and that's a gratitude to even our profession as well as the professionals as such, right? You should be an inspiration to the rest of the community and the patient community as well, okay, because we have a dual responsibilities, that one, to help the fellow community physios in terms of giving them the right direction, and second is to help patients in terms of giving them the sustainable results, okay. So you don't need to leave a patient who says a short term, but yes, what happens is, in the first probably the conversation, you may not be able to get their confidence as such, but okay, once they start getting the results, okay, then they'll immediately get connected and they'll see the results, they'll feel that results, and they'll start cooperating, okay. Never ever go, or never ever, or rather I would say, generalize your one patient experience with rest of the people. Yeah. Okay. Try to understand their their real requirements as such, okay, like when they are suffering from the pain or this thing as such, try to see their the quality of a life. When I'm saying quality of a life is especially the occupation part of it, okay, where they are suffering, okay, what are the things that are impacting, right? So how's what are their hobbies they are compromising, right? See their age, okay, in this age what usually people look for, right? Then accordingly you need to take the words from the ma'am's counseling and try to put it right. You can't, let's say, okay, for an 55-year-old guy, okay, who is at the verge of a retirement, and you tell him that आपके बच्चों के साथ वो खेलना रहेगा. Of course I am probably कोई ऐसा नहीं बोलता है, but still I am using, okay, use those functionalities that are meant for them in that particular age as such, right? अगर कोई 25 का एज रहेगा तो उसके रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, नीड्स अलग होते हैं, okay. Newly married रहेगा तो उसके नीड्स अलग होते हैं, okay. At the age of probably 35, where he is looking for a stability, where is he looking for the career growth as such, okay, promotions as such, or probably he must be leading a team by that time as such, right? So by looking at their different phases of their life, okay, counsel them that what are you going to gain, okay. So जब वो हम लोग बताते हैं तो then they'll be able to correlate easily. Yeah, this is what I'm suffering and this is what I'm going to gain, okay. Then they'll compare their recovery or that particular value for your price as such, okay. 10,000 rupees, but I'm going to lead a better team, lead a team better, right? Or I'm going to increase the productivity, okay. So that they will correlate, and then they'll see, यार मेरा productivity के लिए 10,000 रुपए कुछ नहीं यार, छोड़ दे, मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 10,000 rupees is just a 5%, and that to one time, and I definitely, because my age is just a 35, so I'm definitely looking for a long-term results, right? So those are the things they'll look for, and then accordingly they will be able to take a better decisions as such, okay. Help them, educate them in these levels also, okay. And never ever generalize with one single patient that if you have got this patient, I mean bad experience with this patient, okay, let me generalize, ठीक है ना? तो ऐसा कभी मत करना. और ठीक है, focus on learning, ठीक है ना? I had told you even that time also, and for others also this could be an these things. In the beginning, if you are lacking confidence, okay, focus on learning, ठीक है ना? So once you treat some 5 to 10 patients with this protocol, okay, you will be able to get a fair confidence, ठीक है? If you are lying, okay, मैं वही बता रहा हूँ, blindly आप ये follow करो, okay, give full आपका trust जो है ना इस protocol पे रखो, मैम के ऊपर रखो और पुटे ये करो, ठीक है ना? You will definitely get the result. There is no way that you won't get the results, ठीक है ना? But even if you are lacking confidence, okay, just don't focus on money first, okay. Have a 10 patients experience, you are going to get the results, and with those confidence, you start
communicating better, you start giving them the better warranties as such, okay, in terms of the results, right? So no worries, okay, so hota hai, okay, but don't worry, okay, don't give up and leave it, but you'll have to move on. Okay, okay, thank you Sir, just a minute, two things I want to share. आपकी एक analogy, not analogy I can say, but one thing which I learned, the thing which you told कि बस आंख बंद करके जंप कर लो, स्विमिंग करना अपने आप आ जाएगा. सो अभी कोई भी पेशेंट का कॉल आता है तो आई एम नॉट स्केयर्ड. आई वाज लाइक कि मैं यस बोल देती हूँ, फिर देखा जाएगा जो भी होगा. सो दैट वन थिंग हैपेंड. आई मीन दैट्स अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड टू मी. And the second thing, it's a very funny incident today. It happened. I got IT band tightness syndrome due to some reason. So because of that, अभी जहाँ पे मामा एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वहां पे मैं पहले ऑर्थो के पास गई जस्ट टू नो कि हाउ दे आर अप्रोचिंग. सो उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह लिख के दिया बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट. फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, वहां पे चले जाओ और वहां पे एक्सरसाइज कर लो करके, ट्रीटमेंट ले लो. मैंने बोला ठीक है, लेट मी सी कि हाउ दे आर डूइंग. मैं गई उनके पास. आई डिडंट टेल कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मैंने बोला मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है. तो उन्होंने बिना असेसमेंट किए मुझे मशीन लगा दिया. ठीक है, फिर आज मैं गई. आई वाज लाइक कि मेरा शायद अब आगे का आने का नहीं होगा, तो आप मुझे एक्सरसाइज बता दीजिए कि क्या करना है. तो शी जस्ट टोल्ड मी 3 एक्सरसाइज एंड बोले कि इससे हो जाएगा ठीक. तो मैंने बोला सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज? तो बोले हाँ. मैंने बोला अच्छा, तो फिर ये मुझे समझ नहीं आ रहा रीजन क्या है, आप बताएंगे क्या? तो बोले शायद आपका पैर फिसल गया होगा, उसकी वजह से आपको ये टाइटनेस हो गया. आई वाज लाइक आई हैव टू टेल हर टू डू दिस कोर्स. No, I mean, not making like fun of her, but it was just an incident I wanted to share. Ki, yes, there are people, there are physiotherapists who really need learnings from you, teachings from you. That's what we feel very bad when such kind of an experiences are being given to the patients as such. Okay, it's unfortunate, but yes, we will have to work towards it, and they must take an right decisions. Okay, so हम लोग घोड़े को लेके जा सकते हैं तो पानी तो पीना ही है ना उनको. अगर वो नहीं पीना चाहते तो क्या करें अभी, राइट? अगर वो 10 लाख रुपए स्पेंड करके अगर 30,000 40,000 50,000 स्पेंड करने में भी अगर ये कर सकते हैं तो होता है. Let's see, okay, how things move on. Yeah, thank but you so much, we need to help our patients as such, right? So thank you for sharing, Namrata. Okay, so I'll be sharing this short copy of your certificate to you over mail tomorrow morning. Okay, so that you can do the needful as such. Okay, so thank you. At the end there is a